वेलकम बैक टू माय चैनल प्रभास जीके एंड कंपटीशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर का एमसीक्यू पार्ट 2, जो कि आपका एग्जाम के दृष्टिकोण में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आप लोगों को इस वीडियो को बिना स्किप करके अंत तक देखना है। और एक बात, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है क्योंकि आगे का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। सो लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन सेक्शन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर हार्डवेयर। रिमेंबर, हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को हम नहीं टच कर सकते हैं। सो द आंसर इज एंटीवायरस, क्योंकि माउस को हम टच कर सकते हैं, मॉनिटर को हम टच कर सकते हैं, प्रिंटर को भी टच कर सकते हैं। एंटीवायरस को हम केवल दिख सकते हैं। सो एंटीवायरस इज नॉट ए हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर, इट इज ए सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर। डेडिकेटेड कंप्यूटर मीन्स, डेडिकेटेड कंप्यूटर किसको कहते हैं? जो भी कंप्यूटर केवल एक कार्य करता है उसको हम डेडिकेटेड कंप्यूटर कहते हैं। एंड द आंसर इज असाइन्ड टू वन एंड ओनली वन टास्क। द कंप्यूटर इज असाइन्ड टू one and only one task is called dedicated computer. This means dedicated computer can only do one work. Physical connection between microprocessor memory and the other part is called, the physical connection between microprocessor memory and the other part is called address bus. Shortcut key to insert the current date. Shortcut key to insert the current date is Alt plus Shift plus D. Remember, Alt plus Shift plus D is the shortcut key to insert the current date. Shortcut key to open the current time. Shortcut key to open the current time is Alt plus Shift plus T. Remember, the shortcut key to open the current date is Alt plus Shift plus D, and the shortcut key to open the current time is Alt plus Shift plus T. Microsoft Office was developed in 1980. Remember, the Microsoft Office was developed in 1980. To combine a large number of address with a common text, we have to use, एक से ज्यादा एड्रेस को कंबाइन करने के लिए हम किसको यूज करना है? The answer is mail merge. We can combine one or more address using mail merge. In MS Word, the default alignment for the paragraph is, in MS Word, the default alignment for the paragraph is center alignment. Remember, the default alignment for the line is left alignment, for the paragraph is center alignment. And remember, there are three types of alignment are there, that are left, right and center. And the shortcut key are used for left alignment, we use Control plus L, for right Control plus R, and for center Control plus E. These are all the shortcut key for used for the alignment of the paragraphs and centers. Default name of the first document in MS Word. MS Word का पहला डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? And the answer is document 1. Document 1 is the first name of the document 1. Which of the following offer synonym for the word? And the answer is Therasos. Therasos provides synonym for the words. Which of the following features show the distance text boundaries and page margin? Distance text boundaries and page margin को कौन सा फीचर शो करता है? And the answer is indentation. Indentation is the feature which we can show the boundaries and page margin of a page. How many types of page orientation are there in MS Word? There are two types of page orientation, that is portrait and landscape. There are two types of page orientation in a MS Word, that is portrait and landscape. Default page orientation in MS Word is, the default page orientation in MS Word is portrait orientation. How many way we can save a document? हम एक डॉक्यूमेंट को कितने तरीके से हम सेव कर सकते हैं? And the answer is 3. In 3 way we can save a document in MS Word. In which of the following way we can save a document? To click a save option from the file menu, select save button from the standard toolbar, press Ctrl plus S. And the answer is all of the above. Using all the 3 way we can save a document. MS Word Way first release in, remember, MS Word Way was first released in 1983 and MS Word is first released in 1980.
and the MS Word way is first released in 1983. We can insert a page number through. हम पेज नंबर को इंसर्ट कर सकते हैं हेडर के द्वारा और फुटर के द्वारा. सो द आंसर इज बोथ. वी कैन इंसर्ट द पेज नंबर थ्रू हेडर एज वेल एज फुटर. Maximum number of columns we can enter in MS Word. The maximum number of columns we can enter in MS Word is 63. We can enter maximum up to 63 columns in MS Word. Press dash to replace a dialog box. Dialog box को replace करने के लिए हमको किस की को प्रेस करना है? And the answer is Ctrl plus H. Press the Ctrl plus H to replace a dialog box. Smallest width column in MS Word. Smallest width column in MS Word is 0 inch. The smallest width column in MS Word is 0 inch. Type dash to start a bullet list and press space bar और टैब की. एक बुलेट लिस्ट को स्टार्ट करने के लिए हम किसको प्रेस करना है? उसके बाद स्पेस बार को प्रेस करना है. एंड द आंसर इज स्टार. बुलेट लिस्टेड को हम स्टार्ट करने के लिए पहले स्टार को प्रेस करना है, उसके बाद स्पेस बार और टैब की को प्रेस करना है. टाइप डैश टू स्टार्ट ए नंबर ऑफ लिस्ट एंड देन प्रेस स्पेस बार और टैब की. टू स्टार्ट ए नंबर लिस्ट we have to press first one, then we have to press space bar or tab key. In default, how many lines are there in a drop cap? In default, there are 3 lines in a drop cap. Remember, in default, there are 3 lines in a drop cap. Drop cap क्या है? Drop cap जो फर्स्ट लेटर है जो कि न्यूज़पेपर वगैरह में यूज होते हैं. Up to maximum how many lines we can use a drop cap? And the answer is 10. Up to maximum 10 line we can use a drop cap. To indent first paragraph of your document, you have to press dash key. To indent first paragraph को indent करने के लिए हमको tab की को प्रेस करना है. And the answer is tab key. To indent the first paragraph of document, we have to press the tab key. Which bar shows the current position as far as the text goes? एक टेक्स्ट का करंट पोजीशन हम स्टेटस बार में देख सकते हैं. एक टेक्स्ट का और एक वार्क का करंट पोजीशन हम स्टेटस बार पे देख सकते हैं. The answer is status bar. Using status bar, we can use the current position of a text. The dash is a customized toolbar contains commands that you want to use, and the quick access bar. Remember, the quick access bar contains all the commands. Quick access bar contains all the commands that we can use. Each line represent how many letter in word star? Each line represent how many letter in word star? Very important question. And each line represent about 65 letters in a word star. Each line represent about 65 letters in a word star. Dash cannot be used in MS Office. We cannot use joystick because joystick को हम गेम खेलने के लिए यूज कर सकते हैं. So it cannot be used in the MS Office. What is used to measure the line of object in a document? To measure and the line of object in a document, we have to use the ruler. Press dash for switch to the next window. Press dash to switch to the next window. And the answer is Alt plus Tab. हमको नेक्स्ट विंडो में जाने के लिए Alt plus Tab को प्रेस करना है. Dash are the advanced features that can speed up the editing, formatting you may perform upon in a MS Word document. And the answer is macros. Using macros, we can enhance our editing and formatting in MS Word. To insert a page break, the shortcut key is used. पेज को ब्रेक करने के लिए we have to use the shortcut key Ctrl plus Enter. Ctrl plus Enter is used for page break in MS Word. Copy text formatting from a text. Copy formatting from a text by, in order to copy text formatting, we have to use Ctrl plus Shift plus C. And remember, to apply the copy text, to apply
copy text formatting, we have to use Control plus Shift plus V. Background color or effect applied on a document is not visible on background color or effect is of a document is not visible in प्रिंट प्रीव्यू. प्रिंट प्रीव्यू में बैकग्राउंड कलर देख नहीं सकते हम, क्योंकि प्रिंट प्रीव्यू केवल डॉक्यूमेंट का है और कोई भी डिजाइन का नहीं है. सो इन द प्रिंट प्रीव्यू वी कैन नॉट सी द कलर और इफेक्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट. What is the gutter margin? Very very important question. And the gutter margin is the margin that is added to the binding side of the page when printing. Gutter margin is the margin added to the binding side of the page when printing. Press dash to open a find dialog box, and the answer is Control plus F. Control plus F is used to open a find dialog box. A dash is a predefined design element and colorless scheme, and the answer is theme. Theme is a predefined design element and colorless scheme. Shortcut key Control plus T is used. Very very important. Control plus T is used for hanging indent. Remember, Control plus key is used for hanging indent. And the last question is, when sharing data in Office, the dash document is the document which data was the first entered, and the answer is source. Through source we can enter the first data.